Vishaya Chariya Shirashe Majaya Mukhe Bolo Hari Hari Vishaya Chariya Vishaya Chariya Shirashe Majaya Mukhe Bolo Hari Hari Shirashe Majaya Mukhe Bolo Jana Prabhudu Jana Nitai Gaura Chandra Nitai Dekho de Bhai Shri Bhuvanena Emona Doyal Jata Emona Doyal Jata Dekho de Bhai Shri Bhuvanena Emona Doyal Jata Pashupaki Jure Shana Bidare Shunijara Guna Gata Shunijara Guna Gata Pashupaki Jure Shana Bidare Shunijara Guna Gata Padama Kodana Pohudu Jana Nitai Gaura Chandra Shangshada Maji Rohi Pore Shepore Nahilo Asha Pore Ashepan Apana Karama Jaye Shamana Kahe Lochana Dasha Kahe Lochana Dasha Padama Kodana Pohudu Jana Nitai Gaura Chandra Nitai Gaura Chandra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Rama, Parama Karuna Pohudu Ejana Nitai Gauda Chandra Nitai Gauda Chandra Jayam Vishnu Padparam Hamsha Parivrajaka Acharya Ashtadhara Sarvashushraman Salo Abhacharnara Binda Bhakti Vedanta Shami Shri Prabhupada Ki ISKCON Pratishtha Acharya Shri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Sisinita Gauda Shitanata Vimanandi Hari Hari Bol. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Bankshi Ganamrita Dham Lavanyamrita Janmasthan Jaina Deke She Chanda Badan She Noyane Kiba Khaje Paduka Tar Mundu Braje She Noyan Rahe Ki Karon Bankshi Ganamrita Dham Lavanyamrita Janmasthan Jaina Deke She Chanda Badan She Noyane Kiba Khaja Paduka Tar Munda Baja She Noyan Rahe Ki Karon. Bolun. Hare Krishna. Vamsikana Vidham Navakrita Janmasthani Vidate Kisujanta
Matrimandali. Hg Dham, the abode of the nectar derived from the songs of the flute. Lavanya Amrita Janmashthan, the birthplace of the nectar of beauty. J, anyone who. Na, not. Dekhe, sees. She, that. Chanda, moon-like. Badan, face. She, those. Nayane, eyes. Kiba kaja. Kiba kaj. What is the use? Paduka, let there be. Tar, is. Munde, on the head. Baja, thunderbolt. She, those. Nayon, eyes. Rahe, keeps. Ki, what? Karan, reason. Translation and purport by His Divine Grace Shri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki. Of what use are the eyes of one who does not see the face of Krishna, which resembles the moon and is the birthplace of all beauty? Of what use are the eyes of one who does not see the face of Krishna? Which resembles the moon and is the birthplace of all beauty, and the reservoir of the nectarian songs of his flute. Oh, let a thunderbolt strike his head. Why does he keep such eyes? Report. The moon-like face of Krishna is the reservoir of nectarian songs and the abode of his flute. It is also the root of all bodily beauty. The gopis think that if their eyes are not engaged in seeing the beautiful face of Krishna, it would be better for them to be struck by a thunderbolt. For the gopis, to see anything but Krishna is uninteresting and indeed detestable. The gopis are never pleased to see anything but Krishna. The only solace for their eyes is the beautiful moon-like face of Krishna, the worshipful object of all senses. When they cannot see the beautiful face of Krishna, they actually see everything as vacant, and they desire to be struck by a thunderbolt.
They do not find any reason to maintain their eyes when they are bereft of the beauty of Krishna. Mokam karati bachalam pangam langai te girim jat kripadam aham bande Shri Gurum dinatarinam. This verse from Sri Chaitanya Charitamrita by Krishna Das Kaviraj Goswami, you know that in the concluding purport of Sri Chaitanya Charitamrita, the concluding purport, Srila Prabhupada writes that my Guru Maharaj used to say that there will be a day when the foreigners will learn Bengali in order to read Sri Chaitanya Charitamrita. And for that reason, Prabhupada, he says that for that reason, he's included the Bengali text and the Shabdartha word for word, so that the foreigners could actually read the Bengali. That's why he's included the Bengali. I noticed yesterday we showed the verse, we showed the Bengali, and then we removed the Bengali, just looked at the English transliteration. But you cannot imagine the poetry in this verse. This verse, this Sanskrit Bangla, it's high Shadu Bhasha. This poetry, this Kaviraj Goswami, this poetry, and Prabhu so nicely sang the tune. It's exquisite poetry. We can. Now we are distributing. I remember on the marathon, it was a marathon. This is probably now. This is 25 years ago. I was in Australia, a marathon, and it was December. This is the last day, December 24, last day of marathon. We distributed all the books. And the go down. By the last day, we distributed all the go down was empty, just a few empty boxes torn apart. It's big competition, about amongst brahmacharis, competition. We would even the books that gave the most book points, right? It was the Bhagavatam paperbacks. they were a maha big book, but they were easier to distribute. So they were the most popular. They were the most popular books. So they went big shed. We had big shed go down full of books, and then a marathon began. And so in the West, the Prabhus go on Sankirtan, the Matajis go on Sankirtan. Matajis in the way, the biggest distributors in the Western countries, in the temples, Matajis, very empowered. You know, there's one video, Prabhupada is coming into Surat. One video, Prabhupada is driving. It was big programs. It was the first, I think that was 70, when Prabhupada came back to India with a handful of Western devotees, disciples. And then there was big program in Surat, Gujarat, Gujarat. Big program. There's elephants. Prabhupada was on the elephant. You can see the pictures. And then Prabhupada's going through the city, and it's a big market, and he's in the ambassador. Prabhupada had his own car. I heard recently that in the time of Siddhanta Saraswati Thakur, when he had a car, there was only 3 cars in India. And one of them belonged to Saraswati Thakur. So Prabhupada had his own car. It's in Mayapur now. You can see Prabhupada's ambassador. It's kind of this color. It's there in the Samadhi, Prabhupada's ambassador. So in that car, it's got ISKCON written on it, and the tilak, and it's transcendental chariot. So Prabhupada, he's coming in that car. He's sitting there, and the driver, and then there's stop. There's people on the street. There's people on the street. So there's one Mataji from Australia. Yeah, from Australia. Her name was Shubha Lakshmi Devi Dasi. Sisi Radha Damodar ki, Sisi Nita Gaushundor ki. So the car's coming, and then Shubha Lakshmi, she's standing on the street in the middle of the road, and she's selling a book. She's selling a book. She's so absorbed in selling the book is in the hand of the person, a man, and she's pointing the pictures. She's close to his ear. There's a crowded bazaar, noise, so she's close to his ear, and she's just indoctrinating him with the Bhagavad Kotar. Sharu Shanga Labamatra Sharba Shiti Hoy.
A moment's association with a devotee can change your life. And there she was, she's convincing this person to take the book. So it was taking some time. It takes some time. You have to be patient to convince a person to actually hand over. They take the book, but to hand over the donation. They're okay to take the book, but when you make a donation, that takes some time. You have to convince them. That's actually the seva. Of course, Prabhupada said just touching the book. He said just Jasmin proti shlokam abhat avatapi namani anantasya jasho kintaniyat tadbhagvi shaga janataga biplava. That Jasmin proti shlokam, the books are so powerful that even one verse, Jasmin proti shlokam abhat avatapi tadbhagvi shaga janataga biplava. Janataga, the sinful people, Janataga, sinful people, materialistic, sinful people, Janataga, Biplava, revolution. One sloka of Srimad Bhagavatam can create revolution in the misdirected lives of the sinful civilization. One sloka is so powerful. And Prabhupada says if they read one page, if they read one line, their lives can be changed. They're so powerful. Prabhupada says even just seeing the book will purify them, awaken dormant Krishna consciousness just by seeing the book. What to speak of touching the book? Puranam Branga Sanghitam Idam Bhagavatam Nama. Puranam Branga Sanghitam. It's a literary incarnation. Puranam Branga Sanghitam. It is the incarnation in the form of a book. Incarnation in the form of Shinvatam Sakata Krishna. This is the whole essence of the Bhagavad. It's revolutionary. By very nature, Bhagavatam is revolutionary because it doesn't depend upon the Varnashram circumstance. But everything else in the Vedic system does. Is dependent upon your position in the Varna ashram. And in the very opening of Srimad Bhagavatam, the second chapter, Shuta Goswami, he explains, Srinvatam Shvakata Krishna Punna Shravana Kirtana. That just by Shravan Kirtan, hearing and chanting, then Punna. Srinvatam Shvakata Krishna Punna Shravana Kirtana. That just by hearing about Krishna in the form of Srimad Bhagavatam, that Punna, you get all of the results of Varnashram Dharma. Varnashram Dharma, being a perfect Brahmin, being a strict sannyasi, a renounced and a strict brahmachari, ideal grihasta. This is all Varnashram Dharma. From that you get punya. You get punya. It's pious, piety. You don't directly get prema. You get punya. But you have to become pious. You have to become religious, pious before we can progress in Krishna. If we're sinful, our progress will be restricted. Our progress will be hampered. So we start hearing and chanting. It purifies us of all sin, and all purity, all punya is there, all good, and then then Krishna consciousness awakens in the heart. So this is revolutionary. It's simply by hearing and chanting. Simply by hearing and chanting. That's the recommendation for Kali Yuga. That's all they can do. Simply by hearing and chanting. Simply by hearing, sit and hear. That's sufficient to awaken love of God, to attain perfection. Evam prashanna manasha bhagavad bhakti jogataha bhagavad tatta vijnanam mukta sangha jayate. Just by hearing. Tada raja tama bhava kama lobhadayascha chaita aita anavidham shtitam shate prashiditi. Become situated in mode of goodness. The effects of Raja and Tamaguna are reduced just by hearing and chanting. Nasta praye shiva but nittam bhagavat sevaya. These are all verses you know, that understand their significance. Nittam bhagavat sevaya, hearing. Just like you're sitting and hearing. Actually, this Sri Chaitanya charitamrita, it's even, Shridatma Sri Thakur said even beyond Bhagavatam. Even beyond Bhagavatam. If everything was lost, and keep Bhagavatam and Bhagavad Gita, then they're there to keep it. If at least Chaitanya Charitamrita, everything is there. Everything is there. So whatever is said about Srimad Bhagavatam also is applicable for Sri Chaitanya Charitamrita. It's advanced, postgraduate study. When you look at this verse, and this is the beginning. This is Madhya Lila. Okay, Madhya Lila. Yeah, Madhya Lila. Second chapter. Yeah, second chapter. Wow.
Second chapter. Actually, we haven't really, practically speaking, Sri Chaitanya Charitamrita, practically speaking, in terms of, it begins in the next chapter, practically speaking. Next chapter, chapter 3. Everything up to this point is preparatory. Yeah. Lord Chaitanya Mahaprabhu stay at the house of Advaita Acharya. That's actually when the narration of Chaitanya Charitamrita begins. Up to this point, the whole of the Adi Leela, first 12 chapters is Panchatattva. Kaviraj Goswami. Panchatattva. Why we answer the question? Who can answer the question? You're all temple devotees, representatives of the Parampara. Who can answer the question why in Mayapur Srila Prabhupada is installing the Panchatattva as the main altar? Who can answer that question? Actually, everyone in the temple, every preacher, they should be able to explain that. Why in Navadip, in Mayapur, Chandradaya Mandir, Srila Prabhupada, the main altar is Panchatattva. And everywhere else, where Prabhupada, the open temples, the main altar is Radha Krishna. Even now in Mayapur, Sisi Radha Madhav Ashtashaki Sriman Mahaprabhu ki. But the TOVP is Panchatattva. That's unusual. Even you go Mayapur, Gaudiya, they're not Panchatattva. Gaur Vishnu Priya, Radha Krishna, Panchatattva. It's very extraordinary. Very extraordinary. There's significance for that. And Prabhupada installed Panchatattva in a couple of other places. Laguna Beach, California. Laguna Beach, California. Panchatattva is there. Where else is Panchatattva? Somewhere else in US, I think. I don't think anywhere in India. Right? Bangladesh, Panchatattva is there. And Dhaka. And actually that temple was given to us. It's a 150-year-old temple. It was a family temple. In Dhaka, Bangladesh, we have four temples now. 4 big temples. So the first temple that we had there, that was given to us by a family in 1986, 1985. No, later, 1990s. Bhakti Vikas Shami Maharaj was there, Roshik Prabhu, Bayashiki, in Vrindavan Bayashiki, one of the first preachers in Bangladesh. So in that temple, there is Panchatattva. Panchatattva in that temple. It's 300 years old temple. So in Mayapur, Prabhupada is installing Panchatattva. Why? Panchatattva. So I'm not to answer that takes some. It's a whole epic Panchatattva. But simply we can because Krishnadas Kaviraj Goswami and Srila Bhaktivinoda Thakur has revealed Navadip Dham to us. Srila Bhaktivinoda Thakur. No one even knew about Navadip, about Mayapur. And Srila Bhaktivinoda Thakur, he's revealed the glories of Navadip Dham. Shardva Tirtha Brahmya Traitika Jahapai. The Traitika, the pilgrim, Shardva Tirtha Brahmya, the Jahapai, what he receives from traveling to all the holy Shardva Tirtha Brahmya, Traitika Jahapai, what you get by traveling to all the holy places, Shardva Tirtha, Navadip Sharane, Shailab Shastragai, Navadip Sharane, just by remembering Navadip, you get the results of visiting all the holy places. So you give me an opportunity to remember Navadip. Navadip Brahmite Jai Pode Pode Pai. Wandering, walking in Navadip. Navadip Brahmite Jai Pode Pode Pai. What you attain with every step. Koti Ashvamedha Pal Shardva Shastra Gai. All of the Shastras declare with every step you take in Mayapur. Koti Ashvamedha Pal. 10 million Ashvamedha Jagya. 10 million Ashvamedha sacrifices. Purikit Maharaj performed 3. The emperor of the world. The Ashvamedha Jagya is such a complex and exhaustive program. He did 3. Judisthira also 3. In Mayapur, every step, 10 million. The result. Sharva Shastra Guy. Yes.
So what are we doing? And they're special. Anna Tirtha Aparadi Dandir Bhajan Navadipe Aparadi Shadharma Jon. You know what that means? Anna Tirtha Aparadi Dandir Bhajan. In the other holy places, the offender has to suffer reactions. Anna Tirtha Aparadi Dandir Bhajan Navadipe Aparadi Shadai Marjan. In Navadip, the offenders are always forgiven. Sri Chaitanya is all Thakur Bhaktivinoda Kota. Thakur Bhaktivinoda Navadip Dham Mahatmya. Thakur Bhaktivinoda Kota. What's that? Jeva Kabu Navadipe Koraya Gamon. Anyone who goes to Navadip, Jeva Kabu Navadipe Koraya Gamon, Shardva Aparad Mukta Hoy Shaijon. Just by going to Navadip, you're relieved of all offenses. So this is the why, essentially. Because there's no hope for us in the Kali Yuga apart from Gauranga Nitai. There's no hope for us. This is why Navadip, this is why Prabhupada has established the main headquarters in Navadip. This is why the Panchatattva is going to be revealed to the world. I mean, can you imagine what this is, this temple of Vedic planetarium? I'm speaking not just because I stay in Mayapur. This is our movement. Mayapur, Chandraudaya, the temple of Vedic planetarium, is not Mayapur project. It's all ISKCON. It's all ISKCON combined. Temple of Vedic planetarium. And not just because I stay in Mayapur, I'm talking these things. No, it's everybody. This is important for all movement. We're coming together. Without united effort, we cannot achieve such an extraordinary. And what's going to happen? It was Hoibe Prakash, Adbhut Mandir, Hoibe Prakash, Gauranga Shaiva, Nitya Shaiva, Hoibe Bikash. That the world will come to know the Panchatattva. The world will come to know the Panchatattva. That's Prabhupada's objective. Why? Why Panchatattva? Why that is going to be our main product, our main presenting to the world. Panchatattva. It's very extraordinary when you consider. Why? We're discussing. Sri Chaitanya Avatar Boro Bilokon. Thakur Bhaktivinoda is explaining what is the special characteristic of Sri Chaitanya Avatar. Sri Chaitanya Avatar Boro Bilokon, the special attractive feature. Bilokon, the lokon, the feature, but the bilokon, the special feature, the unique feature. Sri Chaitanya Avatar Boro Bilokon, the extraordinary unique feature of Sri Chaitanya Avatar. Aparad Shate Jib Lave Prem Don. Even the offenders can get prema. Aparad Shate, in the presence of offenses, Jib Labe Prem Don. The jiva can get prema. That is Sri Chaitanya Avatar Boro Bilokon, the extraordinary feature of the Sri Chaitanya Avatar. The offenders can get prema. Because in Kali Yuga, everyone is offender. This is Mahaprabhu's special mercy. Everyone is a potit pabon, hey tu tava avatar. Potit pabon, for the delivering the most fallen. Dina hina jota chilo, harinami udharilo, tashaki jogai maathai. Is the evidence. Particularly Nityananda Prabhu and Goshundar, Param Karuna Bahuduichan, this delivering of Jagai Madhai. And Prabhupada comments in that connection that in that time in Navadip, it was such a pious city. Navadip was such a pious place. Navadip Shampati Ke Bone Bare Pare. Who can describe the glories of Navadip? Ek Ganga Ghate Lokalok Shnan Kore. In one ghat, 100,000 people bathing in the time of Goshundra. Chato Dik Hoite Log Navadip Jai. From all directions. The students were coming to Navadip. Navadip Porile Shay Biddarash Pai. Because if you study in Navadip, you get taste for learning. You get taste in Navadip. So anyway, we were there and we'll come back to that, but we'll come back to the Adi Leela. But the go down was empty. Go down was empty. Last day of book marathon. Go down, everyone's what to do. We're trying to find books here and there. And so I had a set of Chaitanya Charitamrita, my personal set, that I bought before I joined the temple.
I bought it from our temple president, Aniruddha Prabhu. You know Aniruddha Prabhu, Melbourne temple president, leader, well-known leader. He sold me Sri Chaitanya Charitamrita set. I was coming to the temple, a student. So I had that set and I kept that set. So on the last day, what to do? So I took that box. I took my own Sri Chaitanya Charitamrita set and I sold the whole set. Had Sri Chaitanya Charitamrita. Actually, these don't have the dust cover, but they have the nice golden dust cover. They were printed in, I think, Sydney. These are printed where? Mumbai? Mumbai? Or Mumbai, yeah. They're beautiful books. Beautiful. And I'm handing the people, they couldn't believe it. You know, they're getting these golden, and showing the pictures, Chaitanya Mahaprabhu, these beautiful, all these pictures of the devotees, showing the pictures, Mahaprabhu, these pictures, Mahaprabhu in Kirtan, on the street. And the people are giving donations, scratching their pockets. We distributed the whole Sri Chaitanya Charitamrita that day. I still remember, I felt close to Srila Prabhupada that day. Handing out his Sri Chaitanya Charitamrita, especially dear to Srila Prabhupada, Sri Chaitanya Charitamrita, especially a special publication. It's unique. The way that Prabhupada, the way he conceptualized Sri Chaitanya Charitamrita is a story. Bhavananda Prabhu, he said they're in Kolkata, and Prabhupada got a letter from a disciple. He requesting permission to read, and Prabhupada, call the GBC. Prabhupada, the GBC. Call the GBC. And then the devotees were sent, they're here in North America, England, and well, at least the local GBCs. So Bhavananda Prabhu and Jayapataka Swami Maharaj, they came, they're sitting in Prabhupada, read the letter. And we chanted before the Mahamantra, not after. After, no, it doesn't fit there. You don't need to do all the Jai, Jai, Jai. You don't need to do that. Hare Krishna and finish. That's how Prabhupada did. Hare Krishna and finish. You don't need to do Jai this, Jai that, the whole list. Actually, that's Premadoni. That's in Premadoni. Jai, you call out all the individuals, deities, acharyas. So that before you can understand Radha Krishna, you have to get the mercy of Gaunitai. That's why Panchatattva is the altar in the TOVP. Because without the mercy of Gaunitai, you cannot even understand, you're not even eligible to chant the holy name. This is what Thakur Bhaktivinoda and Kaviraj Goswami are giving us. The opening, Navadip Dham Mahatmya, the opening, Jai Jai Navadip Chandra Shachishuta Jai Nityananda Rai Abhaduta Jai Jai Advaita Prabhu Maharshai Gadadhar Srivas Pandit Jai Jai. Panchatattva. The opening 3 verses. Navadip Dham Mahatmya. The 5 members of the Panchatattva are mentioned. He's making it clear. Panchatattva. And then specifically Gauranga Nitai Jar Bole Ekbar. Gauranga Nitai. He's explaining why you have to take shelter of Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga in order to become Krishna conscious. Because if you jump to chanting Hare Krishna Mahamantra, your chanting is offensive. Because we're aparadis. So therefore, we have to take shelter of Gaunitai and remember Gaunitai before chanting Hare Krishna. And Prabhupada has given this. He hasn't said, Prabhupada in the books, he doesn't write so much about Kirtan, but he writes some very specific things. He actually writes in Chaitanya Charitamrita. Actually, you'll find it in the after the Chankasi. He came and disturbed the kirtan, broke the mridanga, and that was reported to Goshundor. Then they were chanting, and as going to the house of the Chankasi, they were chanting Haraya Nama Krishna Yadhavaya Namaha. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudhan. Prabhupada writes, this is a favorite of Chaitanya Mahaprabhu. And he says this is another form of the Mahamantra. And he says in the purport to that section of Chaitanya Charitamrita, he says, already you are familiar with the Panchatattva Mahamantra. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhakta Brinda.
at least in this class, you've given me opportunity to chant Panchatattva Mahamantra several times. For that, I'm extremely indebted. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashri Gaur Bhaktivinoda. We're familiar with that mantra, Prabhupada says, and then there's Hare Krishna mantra, and Prabhupada says, now these additional 2 lines can be added. Haraye Nama Krishna Yadhavaya Namaha Gopal Govindaram Shri Madhusudhan. Prabhupada says this is another form of the Mahamantra. He says it should especially be chanted in Mayapur. And that is Prabhupada's complete instructions on Kirtan. So everything else that we've introduced without the direct order. He said that, chant Panchatattva Mahamantra, Hare Krishna Mahamantra, and Haraye Nama Krishna Yadavaya Namaha Gopal Govindaram Shri Madhusudhan. That is Prabhupada's instructions on Kirtan. So everything in addition to that we've introduced. However, Prabhupada, he did in the Kirtan, he did chant Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. He chanted that in the Kirtan. And also he didn't chant himself, but he was quite happy when the devotees were chanting Nitai Gauranga in the Kirtan. Nitai Gauranga Jaya, Nitai Gauranga. Prabhupada in the Kirtan, he was appreciating that. Gauranga Nitai Jar Bole Ekba Ananta Karmadosh Anta Hoitar. Gauranga Nitai Jar Bole Ekbar. You say one time Gauranga Nitai. Gauranga Nitai. Jar Bole Ekba, those who say one time, Ananta Karma Dosh Anta Hoitar. All of your sins are destroyed. Ananta Karma Anta means comes to the end. They're all gone. Gauranga Nitai, Gauranga Nitai, Gauranga Nitai. Jai Gauranga Namaloy Tarahoy Premudoi. Not only all the karma is destroyed, or Narottam Thakur, he explains, Jai Gauranga Namaloy. Those who take the name of Gauranga, Tarahoy Premudoi. Awakening of prema. That's why Panchatattva is worshipped. The world needs Panchatattva. So that is our life. Make the world, make Srila Prabhupada's teachings known to the world. Distribute the books of Srila Prabhupada. Now is the special time. Hare Krishna. Any questions? Sundar Gopal Prabhu. Thank you so much. Very touching explanation about the glories of God, the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. You mentioned about this verse that Hare Nama Krishna Yadavaya Nama Gopal Govindaram Sri Madhusudhan is very dear to Lord Chaitanya. So I heard on the Govardhan Puja, I was hearing one lecture. So he mentioned that many devotees who worship in the Gopi Bhava, they don't like to hear Yadavaya because this represents the mood of the Yadav. They don't like Yadav form of Krishna. So I heard this lecture, very simple devotee. So this is the first question. And second question, he mentioned that when we chant Gauranga Nitai, even once, we develop Krishna prema. But how to understand it? We are chanting so many times, but we are not feeling that Krishna. So there are two questions. So regarding the first one about Yadavaya, I have no comment. I'll just repeat what Prabhupada said. Prabhupada said a favorite. He said this mantra is a favorite of Chaitanya Mahaprabhu. So that's enough for me. It's enough for me. And then Gauranga Nitai. Yeah. Well, like I said, Navadip Brahmite Jai Pode Pode Pai Koti Ashwamedapal. So then let's just go to Navadip and take one step. That's better than taking sannyas. Better come to Mayapur and we'll take one step. That's more purifying than accepting sannyas. So you could say, let's just go and take one step. No, but we walk around. We
We walk around Mayapur, if possible, barefoot. Kalipa, walk barefoot. Okay. You walk so much. So yes, one step gives you Koti Ashwamedha pole, one step. But that doesn't mean we just take one step. We walk so far. We walk all around Navadip, Goromondo. Not just Navadip Dham, Goromondo Bhumi, Jaiba Jani Chintamani, Goromondo Bhumi. So similarly, the potency of chanting Gauranga Nitai is there. That's a fact. Potency is there. So we chant as much as we can. We chant as much as we can. We patiently wait for that love of Godhead to awaken in the heart. We patiently wait for that love of Godhead to awaken in the heart and chant Gauranga Nitai. Yeah, that's it. What else can we say? We chant as much as possible and then we wait for awakening of love of Godhead. It can be quick. It can be very quick. I mean, Goshundor, see his example as Bhakta Rupa, Goshundor. He took initiation. Parama Adbhut Kothar, Maha Ashambhab, Ramai, Srivas Thakur's younger brother. They're collecting flowers at the Kunda Gach in Srivashangan in the morning. All the Vaishnavas would gather, collect the flowers. Goshundor had just come back from Gaya, having taken initiation from Ishwarapuri Prabhupada. Ramai, Srivas Thakur's younger brother, he's ecstatic with joy. The devotee is saying, what's the news? Something special? Yes, something special. And tell us. Parama Adbhut Kotha Maha Ashambhab Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. The most amazing thing has happened. The impossible. Nimai Pandit has become a Vaishnav. Not just a Vaishnav, a Parama Vaishnav. Parama Vaishnav. He's constantly shedding tears of love of God. Constantly shedding. Even when he's telling us about Padapada Tirtha, Gaya Dham, he can't even say it without erupting in love of God. Just remembering. So that's Goshundor, the example of Goshundor is that he awakened love of Godhead almost immediately upon taking initiation. Maha Nimai Pandit Hoilo Parama Vaishnav. So the example of Mahaprabhu is there. That he became a prema bhakta instantly, and was constantly shedding tears of love of God. So that's showing us the potency of Vaishnav Shanga and Vaishnav Mantra and Vaishnav Sadhana. It's showing us the potency. It's all Leela. It's not that I mean, he's displaying whatever the Leela for our instruction. So in his personal example, he awakened prema instantaneously. So that there's examples of that. But because we're so black, the heart is so black, like a piece of coal. You know coal? You know coal? It's black rock, it's dirty black. As the heart is like that. Even you scrub, it's just all black. It's just all black. So that's our condition. We're so attached to the material life that we remain attached, even though we're NHA Oshad. He's bought the medicine. NHA Oshad. Maya Nashi Bado, like which destroys illusion. Harinama Mahamantra Lao to me Mage. I'm begging. Lao to me. Take it. NHA Oshad. I bought this medicine. So we're drinking for decades. Maya Nashi Bado Lagi, but we're still in Maya. We're still in illusion. We're still attached to the material world. What to do? We keep taking the medicine. But the heavily diseased patients, it takes slower. It's slower for them to become cured. Other questions? Chaitanya charitamrita ki, Srila Prabhupada ki, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki. Oh, Pramana. Hare Krishna. So we like to chant this Hg Atul Krishna Prabhuji. As Prabhuji resides in Srinath Mayapur, so Prabhuji has a great feeling and deep devotion. And Srinath Mayapur that we were able to see in his class. So we were very fortunate that we were able to see that Prabhuji's emotion coming out of his deep ecstasy and love for Srinath Mayapur. So we thank Prabhuji along with chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
तो आज बहुत विशेष दिन है। आज हुआ था श्री श्री राधा दामोदर गौड़ निताय का प्राण प्रतिष्ठा। तो इसके उपलक्ष्य में अभी हुआ छोटा सा प्यूरिफिकेशन। तो हमारे बीच में सामने जो है उनको दान करेंगे। तो we have His Grace राष्ट्रीय प्रभुजी among us. So he will share जो जितना भी हमारा सुंदर इंटीरियर आर्किटेक्ट ने फिर डिजाइनिंग वो सबको पसंद आता है। इंटरनेशनल जितने भी लोग आते हैं बहुत तारीफ करते हैं इस मंदिर का। So we have राष्ट्रीय प्रभुजी among us जिन्होंने इतना हार्डशिप में स्ट्रगल की बीच में से share some of his experiences. How this beautiful temple has come out. आपने सब ने ये सब कुछ देखा कि ये कब होगा तो आखिरकार का सत्ता मंदिर निकल के आया। So we have this last week of this. There you go. हरे कृष्णा। छोटा बड़ी मंदिर बड़ी वाला। थैंक यू। एक्चुअली मैं आई जस्ट वांट टू से अ फ्यू वर्ड्स। तो जब ये प्रोजेक्ट हमारे को गुरु महाराज ने दिया वेदस्वरूप को और मेरे को कि इसको करने के लिए, सो वी केम हियर, तब तो मतलब आप लोग तो जो यहाँ है वो तो सबको पता है कि इसकी कैसी हालत थी। सो वी स्टार्टेड विद दिस एंड आई थिंक आफ्टर 3-4 months we had COVID, so we had to stop the work, then we started again. तो जो भी आप सब देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये दिस वाज नथिंग लाइक प्लान्ड। तो भगवान ऐसे अपने आप जो था ना मोटिवेट करते थे मेरे को कि ये चीज इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। सो अगर डिवोटीज को ध्यान हुए तो ये जो फ्लोर था ये भी हमने लास्ट में जाके चेंज किया, बिकॉज दिस वाज नॉट गोइंग विद द जो भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। और मतलब इसको बनाने में जितना मतलब आनंद आया इस सेवा को करने में, और मैं जब भी आके जब से इंस्टॉलेशन हुई है उसके बाद जब भी मैं आता हूँ तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे राधा दामोदर जी और गौरताई जी जो है वो एक स्पेशल अपनी जो है ना मर्सी दे रहे होते। मतलब मुझे तो हमेशा ये लगा है कि व्हेनेवर आई कम, मतलब जिसको भी मिलता मैं उसको ये कहता हूँ कि आप बादशाहपुर जाओ और आप वहां का एक ऑरा देखो डेटिस को दर्शन करने का। क्योंकि मुझे सबसे जो अच्छी चीज ये लग रही है कि जो हमारे डिवोटीज हैं जो वो सेवा भगवान की कर रहे हैं ना, और वो जो इनकी सेवा को इतना ज्यादा मतलब ले रहे हैं भगवान की, इतना सुंदर आता है जब भी मैं आता हूँ। सो आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि मेरे को कितना आनंद आता है यहाँ पे आके। और मैं हर बार यही कहता हूँ कि सब डिवोटीज की वजह से हो रहा है। और बाकी जो अभी अभी 1 साल के बाद भी ऐसे लग रहा है कि जैसे कल ही ये खुला है। इट इज सो वेल केप्ट एंड मेंटेन्ड। सबसे बड़ी बात ये भी है। बाकी आप लोग और बताएं जो कोई कुछ कहना चाहते हो। मुझे ये याद है कि मेरे को प्रभु जी बोलते होते थे, रामभद्र प्रभु जी क्या बनेगा। कमल माधव प्रभु बोलते थे, प्रभु जी क्या बनेगा। हमको समझ नहीं आ रहा। मैं कहता था ये भगवान ही बताएंगे क्या बने। तो ये बहुत बड़ा सबका एक होता था क्वेश्चन जब भी मीटिंग होती थी कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और मैं कहता था कोई बात नहीं, समझो मत, इसका आनंद लेना जब ये खुलेगा। सो आई थिंक मैंने तो सबसे ज्यादा इसको एंजॉय किया इस सेवा को करने में भी। और ओपनिंग के बाद जो मतलब है, तभी मैं आज वृंदावन में था और मैं सवेरे वहां से स्पेशल आया कि मैंने कहा आज जरूर जाना है यहाँ पे एक बार सवेरे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। She also wants to share many of the pastures जो प्रभु जी नहीं बता पाएंगे, और she has like many experiences of that also. So Mata ji will also share. So we have her Grace Radha Mata ji. She is very famous. She has written a book also, Vaishnavism and Sikhism. And Mata ji preached in Pakistan also. So we have Mata ji and Sarita Mata ji also. Very good. Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai.
So this temple, when it was being made, Prabhuji, my husband, was all into it. He has many projects. He had just done the Bahadurgarh, then the Faridabad. Then in between, Guru Maharaj said that you have to go to Badshapur as well. So he came here. Such a big heart. Thank you. So Guru Maharaj's orders were that he should go to Badshapur. So he came here and then he was meditating. And as aap sabko pata hai, though it was in a very, the condition was not good when this temple was actually the earliest. जिसने सबसे पहले देखा है जब ये मंदिर मिला था. So it was nowhere like this. So he meditated, he made this very beautiful. And he was actually, my role play is that I always advise him the color combinations. So when it was done, he called me up and he said, we have many samples ready for color. You have to decide the colors. So I came over, I remember, with my daughter. My daughter is nowadays, she's the design lead of Rasil Gujral, one of the topmost interior designers. She's the design lead there. So she's also a very good designer. So she came with me, both of us were there, and many samples were put up on the roof. And then we decided for one, this is the one. We decided, both of us, my daughter and I, unanimously. So we decided for this, and then we got this paint done. And then it was just 4-5 days or 1 week ahead of the opening, we were again here. And these wall paintings, they were not there. They were not supposed to be in them, they were not supposed to be there. सिर्फ ये आर्चेज होना था, इसके बीच में जो पेंट देख रहे हैं आप, the beautiful creepers going up, they were not in the design. So we were just here, and the main, there was Vedavyas Prabhu. He said, I want it to be very beautiful. Go ahead and make it extremely beautiful. So we then again decided, my Prabhuji decided again for these to come up. And you won't believe it, we had a team of around about, say, 30, I think so, the painters, the hand painters we had, and they worked overnight with this, like 3-4 days, 5 days, this whole thing, design came up. Then the altar design, the inside. So that was till the last day, the opening, in the night they were working on the fine details you see, the going up in the moldings, the golden, this cable going gold, the knobs going gold, that was all done almost the last day it was. The next day it was the opening. And I was still working with the painters with these dioramas. Many of you would say we want multicolored dioramas, we like the colored dhoti, colored kurta, everything colored. But then frankly speaking, I am not with that, because the Indian colors, when they come out very, very jatak, they become very loud. So we wanted something very subtle and yet beautiful. So in Bahadurgarh, we have done the same with the stone work looking, but not that much of copper gold. But here I told my painters that please go with the copper gold. So I was instructing them, standing here all day long for 3-4 days, telling them to color the dhoti copper gold, how the Yashoda's braid should be gold. So lots of detailing was being done. So that's a lot of hard work comes up when this beautiful temple comes up, such like palace comes up. And the best compliment we got was from the Bibi Govind Maharaj, who said that he would love to carry this temple to Kazakhstan. He said it's such a beautiful palace that he would love to carry this as it is to Kazakhstan. So that's the beautiful compliments we got from many seniors when they came here for the opening day. I remember we were sitting inside with Guru Maharaj taking his darshan before the Abhishek had to start for the deities. The Pran Pratishtha had to be done. So I was sitting inside with the Guru Maharaj, me and my Prabhuji. So Guru Maharaj said, Rasapriya, you're going to Radhika Kripa also, he said, because he said, I told him the color combinations is mine. So he said, it's very beautiful. So he told us, both of us, he said, you're going to have a lot of business now. So many seniors are here and they're all asking who has done it and they want you with them. So, and it's all Guru Maharaj mercy, I must say. And then this temple then came up, everybody loved it. All the seniors who were here, they simply adored it at that time. And yet it's a beautiful memory for all of us to relish how this temple came up. And recently when the Ludhiana temple came up, so Guru Maharaj remembers the color combination, because when he came first to Bahadurgarh, as he entered, when it was all done, as he entered, he said one thing, I love the color. So Bahadurgarh color combination was mine. Here it was mine. And Faridabad also I was advising.
So when the Ludhiana temple came up, though we were not just helping them from outside, we were not involved totally in the project. So Guru Maharaj called us. We were there. Guru Maharaj said, "Can you go to Ludhiana?" I said, "Yes, Guru Maharaj, why not?" Just go. They are stuck with the color combinations. They don't know what colors should come up. So I said, "Yes, Guru Maharaj, I'll go immediately. As you say, tomorrow morning we'll go to Ludhiana." So the next day morning we were in Ludhiana. We helped them out. And when their opening came up, Guru Maharaj was there. I was there, and Guru Maharaj said, "Nice color combination." So that's Guru Maharaj blessings. So I thank you all that you all have a beautiful palace to your deities are enjoying here, and you all have you always come to the palace. आप उनके palace में रहते हो, आते हो, सारा दिन रहते हो. So you all are very fortunate. Hari Bol, Hare Krishna, Shri Prabhupada ki jai. So all glories to Shri Prabhupada who gave these services to us. If Prabhupada would not have been there, we would have never got these services. So these services are beautiful services that help us to meditate on Krishna all the time. Hari Bol, Shri Prabhupada ki jai. For sharing their experiences and for the services. Maharaj told last year Prabhu is the best architect without architecture. Yeah. Guru Maharaj said in Faridabad, well, in Faridabad temple opening, he was handing us over a gift to us. So he said one thing. He said, "Now Rasapriya, you are the official architect for ISKCON." Haribol. So it's actually Mataji, but our century very good. And we have this sort of Bhakti like how the project will also come and share how they started preaching from so many years and the second 31 days come up, the devotees came up, and then the devotees shifted here to take this step forward now with Radha Prabhuji. So we welcome Prabhuji and already chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Om Agyantimirandhasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschati Deshtarine Vanchakalpatarubhesya Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. प्रथम वर्षगांठ है श्री श्री राधा दामोदर मंदिर के स्थापना का। ये जो मंदिर है, वैसे तो हम लोग मैं बिहार से हूँ, तो दिल्ली मंदिर हम ज्वाइन किए, पर मेरी हार्दिक इच्छा थी कि हम लोग बिहार में प्रचार करें, क्योंकि वहाँ पे बिहार का भी उद्धार होना चाहिए। इसलिए मैंने बिहार प्रोजेक्ट जो है वो उसकी जिम्मेदारी दी रामभद्र प्रभु को। मैं खुद भी जा सकता था वहाँ, लेकिन कहा जाता कि अपने स्टेट में ज़्यादा जन्मभूमि में ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहिए ब्रह्मचारी को, इसलिए मैंने रामभद्र को जिम्मेदारी दिया। और रामभद्र प्रभु गए बिहार भगवान का प्रचार बढ़ाने के लिए, तो भगवान ने इनके लिए फिर दिया एक उपहार, वह राधा दामोदर।
गुरु महाराज को हमने नहीं बताया था कि हम जा रहे हैं बिहार प्रचार करने, और महाराज सोचते थे हमको बताया नहीं, अब बिहार क्यों कर रहे हो प्रचार, है ना। वहां पे हम लोग गए, फिर प्रचार किए। कृष्ण कृपा प्रभु से हमारा काफी अच्छा रिलेशन था। और फिर मैं दिल्ली में था उस समय, कृष्ण कृपा प्रभु का फोन आया मेरे पास कि सुंदर गोपाल प्रभु, हमारे यहाँ पे जान पहचान के व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुदर्शन जी महाराज। तो गुड़गांव में उनका एक प्रॉपर्टी है और वो जो है इस्कॉन को देने के लिए तैयार है। तो मैं बोला, वो बोले कि लेकिन गुड़गांव में तो दिल्ली में है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको दिल्ली मंदिर उसको ले। तो यहां से शुरुआत हुआ इस मंदिर का जर्नी। तो मैं फिर हिज होलिनेस राधा गोलोकानंद महाराज जी, उस समय राघव पंडित प्रभु थे, महाराज से बात किया और फिर गुरु महाराज से हम लोग गए मिलने। और गुरु महाराज जो है वो फिर बोले कि आप लोग जाओ और जाके मंदिर देखो। तो मुझे याद है सबसे पहली बार यहाँ पे मैं और राधा गोलोकानंद महाराज दोनों आए थे। हमने पूरा मंदिर देखा, बाहर जाकर उधर रोड था, उस समय ये सब कॉलोनी ये सब नहीं था। और फिर जाके हमने फिर सारा कोऑर्डिनेशन किया कृष्ण प्रभु से, और सारा करने के बाद फिर इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया प्रॉपर्टी का। और अच्युत हरि प्रभु ने उस समय इसको रजिस्ट्रेशन कराने में लक्ष्मी दिए, और सारा मंदिर जो है फिर इस्कॉन के नाम पे ट्रांसफर हुआ। तो शुरू से ही गुरु महाराज की इच्छा थी। तो शुरू में गुरु महाराज बोले कुछ भक्तों को भेजिए यहाँ प्रचार के लिए। और तो ये इस प्रकार से मंदिर फिर आ गया, और महाराज ने कई भक्तों को फिर जिम्मेदारी दी यहाँ पर कि इस मंदिर को आगे बढ़ाएं। और हम लोग प्रचार गुड़गांव में तो बहुत पहले से कर रहे हैं। 2000 रामोदर को तो मेरे से भी पहले से गुड़गांव में प्रचार कर रहे हैं। बेस में थे पहले, गुड़गांव बेस में इंडिया बुल्स में काम करते थे जब यूथ फोरम में थे आप, है ना। तब से गुड़गांव में प्रचार कर रहे हैं रामोदर। तो जब मैं यूथ फोरम जब मैं दिल्ली में ज्वाइन किया, गुरु महाराज यूथ प्रीचिंग की जिम्मेदारी दिए, तो रामभद्र प्रभु को हमने गुड़गांव की प्रीचिंग की जिम्मेदारी दी। जैसे बिहार का जिम्मेदारी और गुड़गांव दोनों अलॉन्ग विद दिल्ली। दिल्ली में तो रामभद्र प्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण सेवा किया यूथ प्रीचिंग का। तो रामभद्र प्रभु ने यहाँ पे बेस जो है, मुझे लगता है 2008 से ही बेस संभाल रहे हैं यहाँ पर। और पहले ये रोड नहीं बना था, उसमें जो टॉल वाला रोड बना है उसे भी नहीं बना था। तो हम लोग दिल्ली से आते थे धौला कुआं ऑटो पकड़ के, फिर धौला कुआं से ऑटो चेंज करते थे, फिर गुड़गांव आते थे बेस में प्रचार करने के लिए। तो उस समय धीरे धीरे प्रचार बढ़ने लगा और यूथ प्रीचिंग हम लोग का जिम्मेदारी था। हमारा फोकस तो यूथ प्रीचिंग ही था, यूथ प्रीचिंग करते थे। फिर जब मंदिर आ गया तो गुरु महाराज मुझे बोले कुछ भक्त भेजने के लिए, भेजा भक्त। और जो पहला जो यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया था विदुर प्रिया प्रभु को,
विदुर प्रिया प्रभु थे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद फिर मधुमंगल प्रभु को बनाया गया। पर कुछ न कुछ समस्याएं आती रही इस प्रोजेक्ट में। तो गुरु महाराज से मैंने बोला था कि आप महाराज हमको दे दीजिए, हम संभालेंगे इस मंदिर को। और गुरु महाराज बोले कि नहीं, आप यूथ प्रीचिंग पे फोकस करो, अभी यूथ प्रीचिंग बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मैनेजमेंट में ज़्यादा खुश हो, क्योंकि मैनेजमेंट में जाएंगे तो यूथ प्रीचिंग से आपका फोकस हट जाएगा। लेकिन लास्ट में देखे महाराज की किसी तरह से भगवान चाहते हैं कि रामभद्र वो संभालें। इसलिए अंत में फिर महाराज मुझे बोले कि आप कोई एक डिवोटी चुनो जो इस गुड़गांव प्रोजेक्ट को संभाल सके। तो मैंने फिर मेरे दिमाग में आया कि रामभद्र प्रभु को देना चाहिए प्रोजेक्ट, क्योंकि रामभद्र प्रभु जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल डिवोटी है, बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड, और ये बहुत ही सरल हृदय है। साधना बहुत अच्छी है इनकी, और सीनियर भी हैं। गुड़गांव एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे मैच्योर डिवोटी की आवश्यकता थी, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो गुड़गांव जो है वो है ना, दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन, स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन है ये, वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि पूरे इंडिया के लोग यहाँ प्रचार करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अच्छे ज़्यादा हैं। तो रामभद्र प्रभु और रामभद्र प्रभु की टीम पूरा यहाँ पे आकर उन्होंने जिम्मेदारी संभाला, और आप सब जानते हैं उसके बाद आगे कैसे इन्होंने बहुत अच्छे से किया। टेम्पल टूटा हुआ था, गुरु महाराज को चिंता थी, तो वेद व्यास प्रभु का बहुत योगदान है इस मंदिर को कंस्ट्रक्शन करने में। एज यूजुअल, केवल यही नहीं, महाराज को जहाँ भी कोई मंदिर प्रोजेक्ट लगता है कि अब रुका हुआ है और आगे नहीं बढ़ रहा है काम है, महाराज के पास कुछ है ना पार्षद हैं, उनके कुछ लोग है ना, ये होते हैं ना कॉन्फिडेंशियल पार्षद है ना। तो जब कोई काम वो रुक जाता है और नहीं होता है तो उनके पास हर काम के स्पेशलिस्ट हैं। पहले तो बाकी लोगों को बोलते हैं तुम लोग करो, है ना, जितना करना है कर लो, लेकिन वो लोग हाथ खड़ा कर, महाराज अब है ना, अब हमारे बस में नहीं है, अब महाराज आप ही को देखना पड़ेगा। महाराज के पास इतना, तो महाराज के पास कई सारे रत्न हैं न, जैसे कहते हैं न 9 रत्न या 10 रत्न, जितने भी, इस तरह से महाराज के पास कई सारे रत्न हैं, पावरफुल डिवोटी हैं। जब कोई प्रोजेक्ट रुक जाता है तो महाराज फिर उन भक्तों को लगाते हैं। तो इस तरह से गुड़गांव प्रोजेक्ट उत्साह में तो तोड़ फोड़ दिया है ना। एक डिजायर तो बहुत होती है ना कुछ करने का, लेकिन कहते ना इट मस्ट डिजर्व ऑल्सो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो तोड़ फोड़ दिए, बहुत अच्छा प्लान था, प्लान भी बनाया जा सकता है, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की शक्ति जो है वो भगवान कुछ लोगों को देते हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं गुरु को। तो वेद व्यास प्रभु जो है महाराज के बहुत प्रिय हैं, और बहुत प्रोजेक्ट्स महाराज के लिए उन्होंने किया है। ज़्यादा जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, उसमें वेद व्यास प्रभु का बहुत योगदान रहा है।
और एज यूजुअल गुड़गांव में, और उनके साथ जोड़ी है राजप्रिया प्रभु की। तो वेद व्यास प्रभु आज नहीं है यहाँ पर, हम उनको बहुत याद कर रहे हैं आज। उनको रहना चाहिए था यहाँ पे। तो मैं भी कल आएंगे शायद, है ना? कल आएंगे तो अपने मुख से बताएंगे, है ना? और राजप्रिया प्रभु, उनके बारे में क्या बताना है, देख ही रहे हैं सब। तो इन सारे भक्तों ने मिलकर इतना सुंदर खूबसूरत मंदिर बनाया राधा दामोदर जी का, और सबके प्रेरणा स्रोत हमारे गुरु महाराज, है ना? तो उनकी शक्ति जो है संचारित हो रही है सारे भक्तों में, जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। गुरुग्राम जो है वो ये माया का गढ़ है, फोर्ट ऑफ माया, है ना? माया के गढ़ में हमने कृष्ण का गढ़ बना दिया है ना? कहते हैं कि माया की छाती पर मंदिर बना दिया सारे, है ना? तमोगुण यहाँ से, जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया है, वहां से तमोगुण सारे संसार में फैलता है। उस तरह से इंडिया का कैलिफोर्निया है गुड़गांव, यहाँ से तमोगुण फैलता है। अभी हालांकि थोड़ा कैलिफोर्निया से पीछे है अभी, लेकिन तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्रचार करना। तो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या है ये भी समझना चाहिए, क्योंकि जब राधा कुंड पे प्रभुपाद जी मिले थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज बहुत चिंतित थे उस समय, और प्रभुपाद जी से अकेले में मिले और उन्होंने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूँ। मैंने बाग बाजार में बहुत बड़ा गौड़ीय मठ बनाया, इतना बड़ा मंदिर बनाया, उसमें संगमरमर लगाया, पत्थर लगाया, सब लगाया। और मंदिर बनने के बाद मैंने देखा कि सन्यासी आपस में लड़ने लगे। किस बात के लिए? कौन रूम बढ़िया है, किस रूम में कौन रहेगा। एज ए प्रॉपर्टी, एज ए लग्जरी कॉन्शियस हो गए, फैसिलिटी कॉन्शियस हो गए, और भोगने की भावना आ गई है सबके अंदर। और स्वाभाविक है, जहाँ पर ऐश्वर्य आता है, जहाँ भी आप गुड़ रखोगे वहाँ चींटी पहुंच जाती है ना? तो उसी तरह से जहाँ ऐश्वर्य रहता है वहाँ पे खतरा भी रहता है ना? प्रभुत्व जताने की इच्छा आ जा सकती है। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले सारे सन्यासी आपस में लड़ रहे हैं, who will be in charge, who will be taking which room। और बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर की आगुन लाग बे, बहुत जल्दी आग लगने वाला है गौड़ीय मठ में, उसमें सब जल के खाक हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं अब पछता रहा हूँ कि मैंने इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाया। मैं सोच रहा हूँ कि बाग बाजार का मंदिर फिर से तोड़कर उसका संगमरमर निकाल कर बेच दूं, बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं पुस्तकों को पब्लिश करूं और डिस्ट्रीब्यूट करूं, है ना? प्रचार करूं, क्या प्रचार करूं। तो मंदिरों का बड़ा
आकर्षक बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी बोलते थे हम तो झोपड़ी के अंदर रह सकते हैं, है कि नहीं? हमारे लिए नहीं चाहिए बड़ा फैसिलिटी, लेकिन झोपड़ी में कौन आएगा? कोई आएगा? यहाँ पे एक झोपड़ी बना दीजिए, कोई नहीं आएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील प्रभुपाद वांटेड, he said that if you make a hut, who is going to come here? Nobody will come. That's why to attract people, we need gorgeous, opulent, attractive, grand temples. To attract people, you know, and to give them the feeling that how great is Krishna. He's not a person that, you know, generally people say temple का मतलब अपने घर के कोने में एक अंधेर कोठरी बना दो, उसमें भगवान को बिठा दो. Create a dark place in your home, in the corner, and let Krishna sit there. So that's what people feel in India. God means great. So you should have everything great, first class everything. Prabhupada said for Krishna, we should give first class everything, best of everything. Best. When people come to Krishna, they should feel that God is great. And this is the devotee's responsibility, to create such a marvelous structure, temple, that people come and they get mesmerized. Yes, this is God. This is God. That kind of neat and clean, everything perfect. And then people get attracted. Because people don't get attracted with, they cannot see love. They cannot see philosophy immediately. They see the grandeur. Grandeur, they get attracted. So that's why Srila Prabhupada envisioned that we should create grand temples. And you see, whenever there is temple is constructed, thousands and thousands of people just start coming. Just start coming. You see, this temple, after inauguration, how many people are coming now? You don't have to go out to register. Isn't it? Thousands and thousands of people are coming here, and they're getting attracted, and we can register. And Rambhadra Prabhuji has started DYPH, Discover Your Permanent Happiness program. And hundreds of people are getting registered, and courses are going on. And, now there is no space where to conduct class. All the space full. And Rambhadra Prabhuji is thinking to create bigger temple. The second part. So this is the purpose of the temple. Purpose of temple is not to enjoy the facility for the devotee. Devotee should always focus on going out, preaching, taking new and new challenges for preaching, not getting settled in the skyscraper building. Of course, Krishna has given us, we can do that. But devotee doesn't feel that he should do that. He always feels very, very enthusiastic to preach the glory of Krishna and to save the fallen conditioned souls. So that's why the purpose of this temple will be fulfilled when we preach more and more. And then Srila Prabhupada will be very pleased, and Radha Damodar also will be very pleased. So I'm very happy that team here, Rambhadra Prabhu and all the brahmacharis devotees here, congregation devotees. It's not one person, but it's a team effort actually, what I see. Many, many devotees. Some are big, some are small, some nobody knows, but they have given their heart to build this temple. This temple is built by heart of the devotees.
Srila Prabhupada was, when His Holiness Kirtanand Maharaj created, golden temple for Srila Prabhupada in West Virginia. And Srila Prabhupada came there. And then devotee was saying, Srila Prabhupada, we are going to put in this temple jewels. The jewels, when the light, you don't need lighting. Automatically light will come out from those jewels. Gems. And Srila Prabhupada said, my jewels and gems are my devotees. And my temple gets enlivened by my devotees. And they're the devotees, they are the one who attract actually people. If people come, everything is wonderful, but there are no devotees. What is the use of temple? It is the devotees. In India, there are thousands of temples, but nobody is there, to attend people, to educate people, to inspire people, to care for the people who come there. So, although there are big, big temples, but no use. So, similarly, when the devotees are there and they receive people, those people who come here, they receive it, sweet smile, welcome them, and give them a very, very positive experience, very, very heart-touching experience. People want to come again. They understand. Seeing the devotee, they feel, they understand, they get a glimpse of Krishna's heart. People are not interacting with Krishna, but they are interacting with the devotees. And when they interact with the devotees, they can understand how nice will be Krishna. If the devotees are so nice, how nice will be the Lord. जिसके भक्त इतने अच्छे हैं, भगवान कितने अच्छे होंगे, ना? So that is the responsibility upon all of us to create such an ambience here. Srila Prabhupada said that whoever comes in this temple, in my temple, they should get free prasadam. Prasadam should always be ready. And anyone comes, at least basic prasadam should be there for everyone. And maybe there are many things, Srila Prabhupada. So maybe Rambhadra Prabhu can think over all this and bring best of all and put it here, in Gurugram to make it, best dream temple of Srila Prabhupada. So what Srila Prabhupada dreamed, that my temple should be like this. And this should be how my temple should be utilized, presented to the people. So I will stop here. Thank you so much for giving me this opportunity that to speak something, glorify devotees, glorify Srila Prabhupada. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. So the emphasize is no prabhuji. It told कि चलो जानते थे कि temple कैसे आया. This temple came from, like we can see, Bihar preaching. They were preaching in Bihar, Patna, and from there this temple came up. So बहुत अच्छा prabhuji ने बताया that was very unique for us. And then on Krishna how he established the connection with the devotees who served in just word and congregation devotees. And then how Rambhadra was there from youth to now, and then he is taking this care of this temple. So we're very thankful to Prabhuji for sharing such wonderful experiences. So with thanks Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. So now we request His Rambhadra Prabhuji how his initial days were when he was coming here, doing job, and now he started preaching, developed preaching, and now this temple came up, and how he's taking the services forward. So we request Rambhadra Prabhuji to come forward. Hare Krishna. Hare Krishna.
ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सो बहुत अच्छा लग रहा है सुन के डिफरेंट डिवोटीज स्पीकिंग रियलाइजेशन राष्ट्रीय प्रभु माता जी एंड प्रभु जी ने बहुत डीप इनसाइट दिया और पिछला हिस्ट्री बताया और स्पेशली प्रभु जी कैसे इन्होंने बड़ा सुंदर कंटेम्पलेशन किया, मेडिटेशन किया, डिजाइनिंग। सो जिसको भी मिलता है वो बोलते हैं कि प्रभु जी हमको ऐसा लगा कि इसको हम उठा के अपने उधर ले जाएं। जो भी डिवोटी आते हैं यहाँ, कल गुरु प्रसाद महाराज है, this temple is so beautiful, very simple, very attractive, है ना। गुरु प्रसाद महाराज जी कल आके परिक्रमा करते बोले थे, वेरी सिंपल, वेरी यूनिक, वेरी अट्रैक्टिव। ऐसा टेम्पल मैंने देखा, जल्दी टेम्पल में बहुत सारी फोटो रहती है ना भगवान की, वो सब चीजें रहती है। सो ही वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, तो महाराज जी बोल रहे थे। सो इट्स ऑल ग्लोरीज टू डिवोटी हु आर made this foundation and contemplated a lot how to make this temple very beautiful and how to that attract so many people's heart, and then everything was planned, everything was churned, and the butter came and the malai came and I just took malai. हमने सिर्फ मलाई खाया है, बाकी तो मेहनत बहुत सब लोगों ने किया है। गाय किसने रखा है, दूध किसने निकाला है, दही किसने बनाया है, चरण किसने किया है, बटर किसने निकाला है ना, उसमें मलाई हमने खाया है ना। So I always say with प्रभु जी आप सब बोलते हैं, है ना, नो आई एम गेटिंग क्रेडिट कि प्रभु जी रामचंद्रपुर में बड़ा अच्छा मंदिर बना दिया। तो मैं प्रभु जी को बोलता हूँ कभी कभी वेद व्यास प्रभु जी, मेरे को बड़ा शर्म आता है ना, कि आप पिक्चर में अभी हो ही नहीं, सामने मैं हूँ, है ना, बट आई नो कि सामने टेम्पल तो आप लोगों ने बनाया है ना? मैं तो सिर्फ बैठ गया हूँ आके यहाँ, और तो लोग मेरे को बोलते हैं कि मैंने टेम्पल बनाया है ना। सो टेम्पल तो भक्तों ने मिलके, महाराज कैसे प्रभु जी बताए, महाराज के पार्षद हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल पार्षद जिनको महाराज आदेश देते हैं वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, है ना। सो इट वॉज नाइस टू हियर, सो वी आर ग्रेटफुल टू हिज गेस्ट वेदव्यास प्रभु, राष्ट्रीय प्रभु, एंड आई नो आई हैव मेनी इंटरेक्शन विद राष्ट्रीय प्रभु। और इस पूरी किताब लिख सकते हैं हम। So we have the dialogue in Punjabi, sometime, और कभी जी प्रभु जी को मैंने पूछा, प्रभु जी क्या हो क्या रहा है, कुछ बताओ तो सही। वो तू चुप रहा है यार, तनु तनु पता नहीं है, एक बढ़िया चीज आएगी बात। तो यह बहुत पंजाबी में डायलॉग होते थे, दिन में 2 बार झगड़ा होता था, फिर बैठ के प्रसाद पा लेते थे, है ना। तो उनको प्रसाद आता था, ये तेरे को बोला ना मिर्ची वाला मैं नहीं खा सकता, मिर्ची वाला नहीं खाना यार, मेरे को रोले आने पड़ते सारा मन में। प्रभु जी आपके लिए पिज्जा बनाते हैं बढ़िया सब करने के लिए, है ना। सो मतलब दिन में बहुत सारे चीज रहते थे, पर्सनली प्रभु जी आते थे, बैठते देखते थे, इंट्रैक्शन, है ना। और कभी मैं बिजी रहता था प्रीचिंग में, प्लान में, तो प्रभु जी आते थे, बैठ के कभी चले भी जाते थे, समझ नहीं कर पाता, इंट्रैक्शन नहीं कर पाता था, बट इट वॉज सो नाइस डे। जब तक एक्चुअली मंदिर नहीं बना था तो हमारा ज्यादा इंट्रैक्शन होता था, डेली बैठते थे, आते थे, बात करते थे। मंदिर के बनने के बाद प्रभु जी चले गए, छोड़ दिए हमको। हाँ, तो कोई मैं फोन करता, प्रभु जी आप तो छोड़ दिए हमको, अभी इससे अच्छा मंदिर नहीं बनता पाते थे, बात तो करते रहते हम लोग। हाँ so they're so loving, and बहुत चीजें मेरे को रिमाइंड कर, देखो आपको ऐसा भी आगे ऐसे करना होगा, उद्घाटन आपको ऐसे करना पड़ेगा। उसको फोन किया, ये देखो यही तुम्हारी बात है, यही तुमको नहीं मिलता है, इसलिए हम फोन किए तेरे को। तो प्रभु जी बहुत चीजें याद कराते थे बीच में, हम तो इतना नहीं किया सब प्लानिंग ये सब तो नहीं, बट ये एक्सपीरियंस में फोन कर, प्रभु जी अभी क्या करना है, आगे कैसे करना है, आप ऐसे करो, आगे ऐसे करो, ऐसे करो, बात करो, महाराज से बात करो, तब होगा फाइनल, उद्घाटन का महाराज करेंगे, आप चले जाओ वहां है 10 शब्दों से बात करो, सीधी महाराज से बात करना जाके। सो लाइक सो नाइस डेज, बहुत अच्छा लगता था। और फिर हम बैठे प्रसाद पाते थे लाइक दैट। सो उद्घाटन हुआ।
Also, they said the inauguration management was excellent. The management and devotees was So just tried. excellent. और गुड़गांव से हमारा कनेक्शन बहुत पुराना है। एक्चुअली जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं एक्चुअली में वहाँ चंडीगढ़ में मेरे को ज्वाइन करना था, लेकिन मैं आ गया दिल्ली। दिल्ली में फिर मोहन रूपोज के साथ बहुत अच्छा रहे, हम वहाँ काफी अट्रैक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली मेरा जॉब गुड़गांव में लगा। तो 2006 5 6 7 में मैं गुड़गांव आ गया था। तो वहीं फिर वहाँ बेस में रहता था। बेस में रहने के बाद फिर मैं भगवान की कृपा से वहाँ दिल्ली से अप डाउन करते, दिल्ली मंदिर में जाता था हर संडे को, दिल्ली वहाँ जाते थे और बेस पे रहते थे, है ना, क्या नाम उनका, गौरांग प्रभु, गौरांग अग्रवाल प्रभु, मानव प्रभु, मानव से बहुत सारे डिवोटी थे, हम बेस पे रहते थे। तो जॉब के लिए ऐसे ढूंढता था, जॉब नहीं मिलता था, सामोहोदर जॉब मिला, अब मिलने लगा, फिर मतलब छोड़ो यार अभी। अब जब छोड़ने की बात की तो सब बड़े बड़े ऑफर आने लगे, लेकिन मतलब अब नहीं करने के। फिर मैं दिल्ली मंदिर ज्वाइन किया, तो अल्टीमेटली फिर सेवा बेस का भी सेवा इधर ही मिला, ऐसा प्रभु बता रहे थे। 2 बेस मिले, एक नोएडा वाला और एक इधर वाला। तो नोएडा नन्हे प्रभु जाते थे, तो मैं गुड़गांव में आता था। तो फिर गुड़गांव बहुत प्रीचिंग करते, हम तो रहते 2007-8 में चलते थे, प्रीचिंग करते रहे। और फिर बीच में 45 टेम्पल बनने लगा। तो महाराज बोले कि महाराज बोले, व्हाई डोंट यू शिफ्ट योर बेस टू द 45 टेम्पल। मैंने महाराज से बोला आपको वहां रेंट देना पड़ता है, वहां शुरू करो। तो मैंने बोला महाराज देखो बेस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, लोटो को जाना पड़ता है। नो आप करो, अपने हिसाब से बनवा लो। तो नहीं मैं टच तेरे प्रभु, बोला आप मुझसे बात करो जाके, जैसे बनवाना बनवा लो। फिर जाके मीटिंग वूटिंग किया, ऐसा बनवा लिया, प्रभु ऐसा चाहिए, है ना। तो हमने, मेरे को लगा था कि 45 में महाराज कुछ करेंगे, भेजेंगे करने के लिए। तो पूरा डिजाइन करा लिया, सब कुछ कर लिया, बेस शिफ्ट करने का भी हो गया था। बट वही है, बेस से कुछ चीज रहती थी। फिर मैंने बोला मंदिर का एनवायरनमेंट अलग होता है, हमारे बेस का एनवायरनमेंट, उनके पेरेंट्स लोग रहने नहीं देंगे। जब पता चलेगा स्टूडेंट्स को कि उनके पेरेंट्स मंदिर में रहते तो नहीं रहने देंगे, इसलिए कि बेस लाइक ए ब्रिज। सो फिर हमारा बोले उधर भी रखो, इधर भी रखो। मैंने ठीक है हमारा ऐसा कर सकते। सो देन वी स्टार्टेड देयर। और बादशाहपुर वाले को तो पता ही नहीं था। हाँ, जब हुआ तो मैंने बेस कुछ हुआ था, तो महाराज से मैंने बात किया, तो मैंने अपना बैग उठाया, मैं इधर आ गया। बादशाहपुर में आ गया था पहले ही, तो प्रभु जी बता रहे बैग उठा के। महाराज को पता चला, महाराज बोले आप कहो, मैंने बोला बादशाहपुर मंदिर में। बोला कौन बोला तुमको? महाराज बोला कौन बोला तुमको? योर हेडक्वार्टर इज दिल्ली। योर हेडक्वार्टर इज दिल्ली, है ना। एंड ही सेड यू हैव मदर लाइक अ हार्ट, नो यू शुड सर्व द ब्रह्मचारीज देयर, तो कम बैक। मैंने झोला उठाया, वापस चला गया। तो पहले आगे थे हम लोग। एंड देन उसके बाद फिर सेवा चलता रहा, बेस में चलता रहा। फिर 45 में कांड हुआ, इसका कुछ पता ही नहीं था। फिर मिलने के बाद ऐसा हुआ। फिर जिस इसके आने के पहले एक महीना पहले गुरु महाराज बोले, कि देखो तुम पंजाबी डिवोटी हो और मैं चाहता हूँ तुमको कोई बड़ी सेवा दो, बड़ा जिम्मेदारी संभालोगे। मैं बोला आप जैसे बोलेंगे, कैन डू दिस, ट्राई। महाराज बोले चाहते लुधियाना मंदिर में मैं चाहता हूँ कि आप जाओ। लुधियाना, इधर जो पंजाबी डिवोटी, एंड देन वहाँ पंजाबी में आप बात कर सकते हो, पंजाबी बोल सकते हो, बड़ा सुंदर मंदिर बनाया उधर। महाराज बोले बड़ा सुंदर मंदिर है, आप जाना। यस महाराज, जैसे वह भेज दो। फिर उसके बाद में 1 महीना वापस हुआ, जैसे प्रभु जी बताया, बैकग्राउंड तो मेरे को इतना पता नहीं था उनका। जब महाराज बोले कि मैं चाहता हूँ कि आप गुड़गांव चले जाओ। सो फिर महाराज बताया कि थोड़ा वहाँ चल रहा है अभी, गुड़गांव इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, आप वहाँ जाएंगे तो अच्छा है। तो प्रभु जी बैठे थे, बोले कि हाँ ये चलेंगे तो अच्छा है। मीटिंग वूटिंग हुआ बाद में। मैंने बोला आई वांट कि आप वहाँ रहो और वहाँ प्रचार शुरू करो। एंड देन वी स्टार्टेड विद महाराज ब्लेसिंग्स। सो एंड देन ऐसे बताया, थोड़ा बिगिनिंग चैलेंज तो रहता ही था। डिवोटीज ऐसे बताया कि एवरीबॉडी इज ट्राई देयर लेवल बेस्ट, है ना। जो भी वैष्णव डिवोटी ने प्रयास किया, लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा बहुत गर्मा गर्म हो चुका था और काफी जो है वो नेगेटिविटी बहुत वो फैल चुका था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। और मेरे को जो ही बोलता था, बोला कि यहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड है 2.5 साल मैक्सिमम, ऐसा बोलते थे मेरे को। एवरीबॉडी विल सेइंग, बोले गुड़गांव आप ब्रह्मचारी हो, आप ध्यान से रहना, यहाँ के लोग बड़े चहल पहल होते हैं, यहाँ की कॉर्पोरेट की माताएं हैं, थोड़ा दूर रहने का है। एक ब्रह्मचारी की जो भी भक्त कोई भी आता है, उसकी 2.5 साल उम्र है। 2.5 साल से कोई ज्यादा टिकता नहीं है इस गुड़गांव में। मेरे को डर लगने लगा भैया, मैं
है कि नहीं? तो मैंने महाराज बचाओ। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग से प्रभुपाद में अभी 4 साल होने वाले, टाइम 2.5 साल का निकल चुका है। सो एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। Yeah. कि जो चीजें preaching खाने के लिए preaching, the preaching which we have seen after arrival of the Hg Atul Guru, like he has seen the preaching of brahmacharis, making the youth brahmacharis. But that preaching I've seen his Achyutari Prabhu. मैं बहुत साल रहा अच्युत प्रभु के साथ में। I was for him like a, मतलब I was a child. So he was preaching, बहुत उन्होंने मेहनत किया और ऑर्गेनाइज कराते थे, कथा ऑर्गेनाइज कराते थे, वृंदावन चंद्र प्रभु ऑर्गेनाइज कराते थे, है ना? एंड देन यूज्ड टू कम एंड देन ही वाज यू नो पैटिंग लाइक ए चाइल्ड, बड़ा हमको प्रेम करते थे, बैठते थे। तो वो भी ऐसे, हम उसको भी सब पंजाबी में बात करते थे, और पंजाबी पुत्र की हाल है तेरा, ठीक है? मैं कहा ठीक है। So these devotees, they are old devotees, they have worked hard and they made the foundations nicely, है ना? और बाकी थोड़ा भगवान की माया तो है ही है, इधर तो होना शुरू करते हैं। So but I try to unite all the devotees. That's मैंने एक थोड़ा प्रयास किया कि जो खिल रहे हुए डिवोटी थे, और मैं चाहता था कि ये राधा दामोदर ये मंदिर है लोग के हृदय में छप जाए। तो मैं बाहर तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने स्टार्ट किया कि भक्तों के हृदय में मंदिर बन जाए और राधा दामोदर जी उनके हृदय में चले जाए। So now I see that different disciples महाराज के, और गुड़गांव में सबसे ज्यादा था ये वाला कि डिफरेंट डिसाइपल ऑफ डिवोटीज हैं, सबके महाराज के डिसाइपल हैं। तो थोड़ा मतलब खिंचतानी होता था, दिक्कत आती थी बीच बीच में। But now you can see that everybody is coming together, we are meeting, we have a Saturday servant leadership class, and everybody's, get together, and then with one mission, and we are progressing. There is a whole team, So we have disciple of, either Radha Swami Maharaj, and then, Radha Govind Maharaj, and Bhakti Charu Swami Maharaj, Jap Taka Swami Maharaj, Loknath Swami Maharaj, Bhakti Sarup Dham Maharaj, Bhakti Vikas Maharaj, So, Gatu Maharaj, everywhere, So Vedvatiya Maharaj. So now, this Prabhupada Chaitanya wanted to make a one home in which whole world can stay. So वो तरह का जो मैं ट्राई किया कि how to connect everybody, and actually how to make this Prabhupada as a center, not as a, of course Guru is there in our heart and then we are worshipping God, but if you can see for the long term, long vision, and then we make Prabhupada as a center, and then there is disciple, they're all for us, they're all our, हमारे लिए पूजनीय हैं, they're all worshipable for us. So I try to make, uniting everybody, giving them chants and then something like that. And then we started preaching everywhere. जहाँ preaching कर रहे हैं सब लोग. So this is not actually I credit, मेरा credit है कि मैं सबको somehow unite करने का प्रयास किया. But already preaching लोग devotee कर रहे थे. But अलग थे. अभी एक साथ आगे तो ज़्यादा लगता है. Understand? This is the power of unity. This is the power of teamwork. है ना? So बाकी राधा दामोदर जी की कृपा है. 1 साल हो गए, पता भी चला नहीं कैसे निकल गया. तो आज हमने उनका कि राधा दामोदर परी ड्रेस बनाएंगे हम. और जितनी सारी माताएं हैं, है ना, वो दिन में कल में से पूरा बोले प्रभु ये वाला पहनाना कि ये वाला पहनाना, मतलब आपको क्या अच्छा लगता है? बोला प्रभु कल पूर्णिमा है और व्हाइट होना चाहिए. मैं कहा फिर फूल, बोला फूल वैसे होना चाहिए. मैं बोला जो आपको अच्छा लगता है आप करो. तो सारी माताएं भी, है ना, फूल बनाती हैं, ड्रेस चूज करती हैं. एवरीबडी इज लाइक ए फुली कंप्लीटली मेडिटेटिंग. It's all teamwork, all the devotees, है ना, ब्रह्मचारीज, कांग्रेगेशन डिवोटीज मिलके कर रहे हैं, तो सब चीजें आगे बढ़ रही हैं, है ना. और अभी टेम्पल का कीर्तन बड़ा अच्छा हो गया है. भगवान की कृपा, जब से 24 आवर कीर्तन होता है काशी में, है ना. और अभी इवनिंग में कीर्तन चलता है ना. और बाकी हो रिपोर्ट बनाएंगे अच्छा सा, है ना.
जो भी कॉन्ग्रीगेशनल प्रीचिंग, यूथ प्रीचिंग, है ना, और भी है कॉलेज प्रीचिंग भी है स्टार्टेड थ्रू द जीडी गोयनका में शुरू कर दिया है, केआर मंगलम में शुरू हुआ है, एंड देन यहाँ गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में अभी जो है वो एमओयू साइन होगा जल्दी से जल्दी, है ना। सो लाइक दैट, एंड मेरे को सबसे बड़ा हेल्प मिला नाम आश्रय प्रभु, सेवा केदारी प्रभु, राधे गौर प्रभु, श्री निताई प्रभु, और ऑल दिस वंडरफुल डिवोटीज, and they helped a lot to make this temple very brilliant. और यही राधा पार्षद से, राधा दामोदर जी से, राधा पार्षद हमारे, आप बोले पहले राधा पार्षद निकलता हूँ, आज सुबह बोल रहा जयकारा लगा रहा कि श्री राधा पार्षद फर्स्ट बर्थडे की जय। तो 15-20 साल वहां रहे ना, तो हमारे आराध्य वहीं से शुरू हुआ, जन्म वहीं से शुरू हुआ। हाँ, तो वहां के एक्सपेंशन राधा दामोदर जी है। एक भक्त बोले कि आज तो राधा श्याम सुंदर ही लगता आ गए हैं। हाँ, ऐसा लगेगा राधा श्याम सुंदर वृंदा की इधर आ गए ना, कभी ऐसे रहता है मुकुट ऐसा, राधा रानी का भी इससे रहता है। गौरनिता इज आल्सो लाइक दिस, है कि नहीं। सो बहुत कुछ शेयर करने के लिए चैलेंजेस, तो जितना प्रभुपाद ने चैलेंज किया, हम क्या चैलेंज करेंगे, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं है कोई चैलेंज है, बिकॉज ऐसे कोई चैलेंज है ही नहीं हमारे लिए। प्रभुपाद हैज ऑलरेडी टुक लॉट ऑफ चैलेंजेस, पर फिर भी डिवोटी को इंस्पिरेशन मिलता है, कुछ प्रोजेक्ट आगे निकलता है, तो चैलेंज हमेशा रहते, कभी फिर वो शेयर करेंगे, बट अल्टीमेटली ठीक है। और कोविड के बीच में थोड़ा हुआ था, जैसे हुआ नहीं था उस समय, सब वक्त थे, बड़े बड़े मोटे मोटे मच्छर रहते थे, गटर खुले रहते थे, क्या करते। कोविड हो गया बीच में, बस के बारह बोले कि 3 महीने में बन जाएगा। जब मेरे को बोला हमारा विद इन 3 months विल फिनिश दिस, मैं बोला थैंक यू वेरी मच। अब बीच में कोविड आ गया, बीच में ये हो गया, वो 3 साल लग गए 3 महीने के। और तो सब लोग प्रभु जी कब बनेगा, सब होंगे प्रभु जी कब बनेगा, प्रभु जी कब बनेगा। मैं प्रभु जी से पूछा प्रभु जी कब बनेगा, ये पूछ रहे वेद व्यास प्रभु जी कब, किसी को कुछ पता नहीं कब बनेगा। मैं बोली कब बोल रहे, डिवोटी बोल रहे कब बनेगा। मैं बोली बैठो सही, प्लानिंग तो करो। और यार साढ़े प्लान अलग हो जाए, तो बनेगा तो फिर पता चलेगा। मतलब बताओ तो बनेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा, मतलब क्या बने, कुछ हमारा काम कोई इनपुट देना, इनपुट नहीं लेना किसी वाला, वो चीजें खराब हो जाती है। सो गुड कंसेप्ट, सो बड़ा अच्छा बन के आ गया, बट थोड़ा समय लगा बीच में, लेकिन बहुत सुंदर बन के निकल के आ गया। और जो भी वक्त आते हैं उनको अच्छा लगता है, छोटा है, स्वीट है, कंसाइज है, बट बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जो भी आता मतलब मैं उठा के लेके जाने का मन करता है भैया। सो यस, या यूनिक होना चाहिए कुछ। यस यस या, तो अभी आप लोग का सेकंड फेज शुरू कर दीजिए जल्दी से। और टेम्पल हॉल्स आर फुल, रूम्स आर फुल, सैटरडे संडे, है ना। तो अभी हम सोच रहे हैं कि अगली क्लास डीवाईपीएस कहाँ करेंगे। तो अभी हमारे भगवान की कृपा से कितना शुरू हो गया प्रभु, लगभग वी हैव कनेक्टेड 650 पीपल टू डीवाईपीएस सेशन। हर महीने में एक डीवाईपीएस शुरू होता है यहाँ, और एक डिवोटी उसको लेता है। तो कनेक्टेड डिवोटी 168 दे स्टार्टेड चैंटिंग हरे कृष्णा। 600 लोगों ने कोर्स किया अभी करने के लिए, गोइंग वेरी नाइस। नया प्रीचिंग शुरू हुआ है। तो नाउ वी डोंट हैव सो मच हॉल, उसकी आवाज उधर चली जाती है, उसकी आवाज उधर चली जाती है। बोलते उस एक्चुअली ना वो क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी जो है लेक्चर जैसे होगा तो उसका लेक्चर उधर शुरू हो जाएगा, दूसरे रूम में शुरू हो जाएगा। वो बोले कि वो वायरलेस रहता है ना, तो पकड़ लेता हूँ, उसका लेक्चर उधर जा रहा है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ, कहाँ से आवाज आ रही है। तो दूसरे रूम का लेक्चर का आवाज इधर आता है आजकल। वो बोले प्रभु जी ये क्या डिस्टर्बेंस हो रहा है पूरा। सो अभी क्या है, बीपीएस भी तो चल रहा है, नट्स भी चल रहा है, डीवाईपीएस चल रहा है, कांग्रेगेशन चल रहा है, भक्ति विजन चल रहा है। सो दैट विल प्रभु जी से बताया कि पर्पस ऑफ द टेंपल इज टू हैव मोर प्रीचिंग। सो अभी प्रभु जी सेकंड फेज पे लेके आना पड़ेगा। अभी जल्दी शुरू करते हैं वेद पार्ट 2 एंड पार्ट 3, है नहीं। सो थैंक यू सो मच। अभी बहुत टाइम भी हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सब डिवोटीज का। एंड अगेन थैंक्स टू अल्टीमेटली गुरु महाराज, है ना, डियर बिलवड गुरु महाराज की सेवा दिया। महाराज बोले आई हैव गिवन यू गोल्ड माइंड रामभद्रा, गुड़गांव इज आई हैव गिवन गोल्ड माइंड, है ना। सो जस्ट गो एंड डेवलप इट नाइसली, है ना। एंड मैंने बोला हमारा क्या भाव होना चाहिए। महाराज बोले भाव तुम्हारा ये होना चाहिए
कि तुम सबके दास हो। हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट बने महाराज बहुत कुछ आता है, तो महाराज बोले कि यू विल बी द सर्वेंट मूड, द सर्वेंट ऑफ ऑल। तो मेरे को समझ गया है कि मतलब सच्चे सीनियर प्लेटफॉर्म, सच्चे ये अभी भी वो ये कॉन्शियसनेस रखते हैं कि मैं सबका दास हूँ, तभी तो बोल पा रहे हैं। तो ये सर्वेंट ऑफ ऑल, यू टू सर्व, सो जस्ट ट्राइंग टू सर्व ऑल द डिवोटीज। बीच में कुछ त्रुटियां हैं तो आप लोग क्षमा करना, कभी थोड़ा ज्यादा बोल देता हूँ। श्री श्री राधा दामोदर भगवान के, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। So we'd like to thank Sisters Ramakrishna Prabhuji for sharing his content experiences with Rasa Priya Prabhu while that session was going on, or the experiences of his initial day program, and coming into the temple, and then immediately डीटीज के लिए बहुत कुछ हुआ था, इसको पूरी किताब लिखूंगा बाद में। डीटीज के लिए हुआ था, डीटीज को बड़ा छोटा ये बोला मेरे को बीच फंसा दिया आप लोग, ओए आप सीधी गल करो यार। मैं बोला हम बातें बड़ा 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 होना चाहिए प्रभु जी, बोला नहीं छोटा होना बड़ा होना चाहिए। बहुत चला 1 महीने तक। so there are another leela happened, how it came out, that is another leela, another pastime, Ramakrishna will write book on that. And Prabhuji also said how his initial days were when he was in ways, and how when we came up, and immediately after that, COVID came up. So already the things were on the head, like तो पिछला हमारा बैगेज का बहुत बड़ा वजन इसको उठाने में ऊपर नीचे रखना था, और ऊपर से और आगे कोविड, so things were very difficult, but Ramakrishna Prabhu came with a unique idea and made it so wonders throughout the। वो ज्यादा अच्छा टाइमिंग था कोविड के लिए, हमने ऑनलाइन जन्माष्टमी शुरू कर दिया, कम खर्चा कुछ था नहीं उस समय। When we collected, I told महाराज we have collected this much amount, महाराज बोले अच्युत को वापस कर दो। So then he came up with beautiful ideas, but then we got Lakshmi for the service of Vishnu, but लेकिन Krishna like जाना था